Okay, so question is calculate the molar mass of the following. आज हम NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और उसमें पहला क्वेश्चन जो है अपने सामने वो है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। उसमें पहला है H2O, दूसरा CO2 और तीसरा CH4। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लोअर क्लास में भी आपने किया हुआ है, तो बताओ बेटा। फर्स्ट जो है, सबसे पहले इनके एटॉमिक मास आपको नोन होने चाहिए। H2O में अगर आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है H2O का, तो वी हैव 2 हाइड्रोजन्स और 2 हाइड्रोजन में एटॉमिक मास कितना होता है एक हाइड्रोजन का? 1। और ऑक्सीजन का, तो दैट मीन्स किया जाएगा 18 ग्राम पर मोल, और वी कैन राइट इट एज 18U। या तो आप 18U लिखो, और अगर आपको ग्राम लिखना है तो आपको साथ में पर मोल लिखना पड़ेगा, दैट इज द यूनिट। सेकेंड, मोलर मास ऑफ CO2। तो CO2 में एक कार्बन है और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। 2 ऑक्सीजन है और एटॉमिक मास ऑफ ईच ऑक्सीजन इज 16। तो ये हो जाएगा 12 + 32 मीन्स 44। या तो आप लिखोगे 44U या फिर आप लिखोगे 44 ग्राम पर मोल। थर्ड वन इज मोलर मास ऑफ CH4। तो CH4 में एक कार्बन है और 4 क्या है? हाइड्रोजन। तो 1 × 12, 4 × 1 मीन्स ये आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल और 16U। या तो आप लिखोगे 16 ग्राम पर मोल या 16U। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, तो आपने लोअर क्लास में किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4। वन पॉइंट 2 और 3 हम कर चुके हैं पहले। 1.4 जो क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air. 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen, or 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen. तो इसमें हमें अमाउंट किसका निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यस, कौन सा? 1.3। ओके, तो इसको हम करते हैं साथ में। पहले 1.3 लेता हूं।
बेटा 1.3 जो क्वेश्चन है में है डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% oxygen by mass. So while writing empirical formula, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एलिमेंट. यहाँ एलिमेंट है, एक आयरन है और दूसरा है ऑक्सीजन. नाउ परसेंटेज, तो परसेंटेज आयरन की बेटा दी हुई है 69.9 और जो ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज दी है 30.1. उसके बाद हम क्या लिखते हैं? इनके एटॉमिक मास. तो आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16. तो फिर हम क्या निकालते हैं? एटॉमिक रेशियो, या क्या बोलते हैं उसको? मोलर रेशियो. तो मोलर रेशियो के निकालते हैं, परसेंटेज बाय मास को डिवाइड करते हैं इसके एटॉमिक मास से. ठीक, तो 69.9 और 56, तो 69.9 डिवाइडेड बाय 56, तो बेटा ये आता है अराउंड 1.25. और जो 30 पॉइंट दूसरा है 30.1 और उसको डिवाइड करना है 16 से, तो इट कम्स आउट टू बी 1.88 अराउंड. अब क्या निकालते हैं? सिंपल मोलर रेशियो. तो सिंपल मोलर रेशियो के लिए क्या करते हैं? हम जो मिनिमम नंबर है इन दोनों में, मोलर रेशियो का मिनिमम, उसको डिवाइड कर देते हैं उससे दोनों को. तो 1.25 मिनिमम है, 1.25 से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया. तो 1.25 को 1.25 तो ऑब्वियसली दैट इज 1, और 1.88 जो है उसको हम करते हैं तो 1.5 के अराउंड आता है. 1.88 को डिवाइड करो 1.25 से, तो वैल्यू आती है 1.504, मींस राउंड अबाउट 1.5. उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. बेटा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में इस मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये ऑलमोस्ट सिंपल होल नंबर बन जाए. 2, वेरी गुड. तो हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा? बोलो. यस, तो अपने पास ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3. का मतलब Fe2O की रेशियो आ जाएगी 2:3. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया बेटा Fe2 एंड O3. दैट्स इट. तो ये आंसर आएगा. ये आपको टेबल पूरा लर्न करना है, ठीक है? और अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n फैक्टर. और ये जो कॉमन फैक्टर या n फैक्टर क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड, मोलर मास को डिवाइड करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, राइट? उससे n फैक्टर आएगा, तो n फैक्टर को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन 1.4. कैलकुलेट करना है आपको अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड जब हमारे पास क्या हो? 1 मोल कार्बन को बर्न करना है इन एयर, फिर 1 मोल कार्बन
in 16 gram of oxygen और 2 moles of carbon in 16 gram of डाइऑक्सीजन। तो ये वो लिमिटिंग रेजेंट जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। कार्बन व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन तो वी गेट CO2। ये है इसका मतलब, अगर 1 मोल कार्बन हो, 1 मोल कार्बन हो तो 1 मोल ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड और उससे रिएक्ट करने के बाद वी गेट 1 मोल ऑफ CO2। ये कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अब आपको होता है एयर जो होती है उसमें तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो इसका मतलब लिमिटिंग रेजेंट क्या है, सिर्फ कार्बन। तो कार्बन विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो अगर 1 मोल कार्बन होगा तो 1 मोल कार्बन जो है दैट विल गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2? 1। वेरी गुड। कि 1 मोल कार्बन जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और 1 मोल CO2 बनाता है। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड formed when 1 mole of carbon is burnt in air हो जाएगा कितना, 1। तो 1 मोल का बेटा मास कितना होता है? What is the mass of 1 mole? Mass of 1 mole is equal to its molar mass. Mass of 1 mole of CO2 is equal to molar mass of CO2। तो मोलर मास CO2 कितना होगा, 1 into 12, 2 into 16, टोटल अभी किया था हमने 44 ग्राम। तो इसका मतलब 1 मोल कार्बन अगर बर्न करता है इन एक्सेस ऑफ एयर, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, एयर मींस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा मान लेते हैं, है ना। तो वी विल गेट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वी कैन से 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। C plus O2 to give CO2। अब क्योंकि आपको कार्बन का अमाउंट भी दिया हुआ है, कार्बन का अमाउंट किसमें दिया है, इन मोल्स। कार्बन का अमाउंट दिया है इन मोल्स और जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट दिया है इन ग्राम, राइट। 1 मोल कार्बन 16 ग्राम O2। तो अब सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, लिमिटिंग रीजन। पहले लिख लो, ये 1 मोल है और ये कितना है, 16 ग्राम। ये अलग से लिख के रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन लिखते हैं। इफ वी हैव 1 मोल ऑफ कार्बन देन वी नीड 1 मोल ऑफ O2। अब इसके कार्बन के तो मोल्स ही दिए हैं, इसको मोल में रखो, बट जो O2 है उसके हमें दिए हैं ग्राम। तो हमने O2 को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया और होते हैं 32 ग्राम। का मतलब ये हुआ कि अगर 1 मोल कार्बन है हमारे पास तो हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, डाइऑक्सीजन। बट हमारे पास कितना है, ओनली 16 ग्राम। दैट मीन्स O2 इज लिमिटिंग रेजेंट। अब लिखोगे आप एज 1 मोल ऑफ कार्बन requires 32 gram of O2, but we have only
16 gram of O2. That means O2 is limiting reagent. So limiting reagent is the one which is required in greater amount, but we have in less amount, or which is consumed completely during the reaction. Because if required is more and we have less, obviously that is consumed completely. So now we will have limiting reagent as O2. So limiting reagent will decide the amount of product formed. So now we will write the equation once again, and now we will focus on O2 only to get the product. Carbon is in excess, so carbon is left untouched because that is left unreacted, but O2 is reacted completely. So now we compare O2 with CO2. 1 mole of O2 give 1 mole of CO2. That means 32 gram of O2 will give 44 gram of CO2, but we have only 16 gram. So 16 gram of O2 will give 22 gram of CO2. So now we will write it in words that amount of CO2 produced when 32 gram of O2 react with excess of carbon is equal to 44 gram. So now amount of CO2 produced when 16 gram of O2 react with excess of carbon. So that is equal to 44 over 32 into 16. That means 22 gram. 22 gram. तो ये हो गया बेटा सेकंड क्वेश्चन. अब आ जाओ थर्ड पे. अब थर्ड क्वेश्चन जो है इसका थर्ड पार्ट, again write the same equation and decide the limiting reagent. We have, if we have 1 mole of carbon, so 1 mole of O2 is required, means 1 mole of carbon require 32 gram of O2, but we have 2 moles of carbon, so we need 64 gram of O2, but we have again 16 gram. Again O2 is limiting reagent, and 16 gram same product is formed. Got it? Write as 2 moles of carbon need 64 gram of O2 for complete combustion, but we have only 16 gram of O2, so O2 is limiting reagent. That means O2 will decide the amount of product formed. Rest of the thing are same. We will start from here in the same way. That amount of CO2 produced when 32 gram of O2 react with excess of carbon 44 gram,
and amount of CO2 produced when 16 gram of O2 react with excess of carbon, that is 22 gram. That's it. Now next, 1.5 we have done, 1.6 we have done, 1.7, 1.8 is determine the molecular formula of an oxide of iron. Same question. Now 1.9. 1.9 is we have to calculate. अच्छे से सुनाई नहीं दिया. Yes, yes. तो कैलकुलेट करना है आपको द एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. We have to use the given data. See, chlorine 35% natural abundance is given. Its molar mass is also given. Chlorine 37, its natural abundance is given, percentage is given means, and its molar mass is given. So to calculate its average, yes, yes. बेटा जैसे आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला CH, so its empirical formula mass is 12 plus 1, 13. See, like we have benzene, okay? So benzene, its molecular formula is C6H6. Its empirical formula is CH. So its molecular formula mass is 78 because 12 6 ja 72 plus 6, and its empirical formula mass is 12 plus 1, 13. So what is N factor? 78 over 13. Molecular formula mass over empirical formula mass, that is 6. Okay. Okay, now average atomic mass. Calculate average atomic mass. What we do, first we write percentage of isotope 1 into its molar mass of 1 plus percentage of isotope 2 into molar mass of 2 over 100, because if percentage is given, total abundance is 100 only. So now percentage of first isotope is 75.77 into its molar mass, that is 34.9689, plus percentage of second isotope, that is 24.23 into 36.9659 divided by 100. That is the way to calculate. Just multiply. First is 75.77 into 34.9689 is 2649 2649.59. कंप्लीट लिखना है तो 3553, because we are using calculator, so better to write complete, plus 24.23 multiplied by 36.9659, so it is 895.683757.
divided by 100. So now just add 895 plus 2649.593553 means 3545 point 27731 over 100. That means it is round about 35.45 U. So this is the average atomic mass of chlorine. Got it, beta? गुड. ये हो गया आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1.9. Now next question number 1.10. टेंथ क्वेश्चन जो है इस तरह से यह है कि in 3 moles of ethane calculate the following. First, number of moles of carbon atoms, number of moles of hydrogen atoms, and number of molecules of ethane. So question number 1. In 3 moles of ethane, we have to calculate number of moles of carbon atoms. So first we calculate number of moles of carbon atoms in 1 mole of ethane. So ethane is C2H6. Tell me, how many number of moles are present? Number of moles of carbon atoms in 1 mole of ethane. Say C2H6, 2, because 2 carbons are present in 1 molecule of C2H6. Right? The number of moles of carbon atoms in 1 mole of it is 2. So as it is 2, so now number of moles of carbon atoms in 3 moles of ethane. Yes. In 3 moles of ethane, 6, because in 1 mole of ethane there are 2 moles of carbon atoms. So in 3 moles there are total 6. So number of moles of carbon atoms in 3 moles of ethane are 6. Now question number 2, number of moles of hydrogen atoms. So now number of moles of hydrogen atoms, number of moles of hydrogen atoms in 1 mole of C2H6. The number of moles of hydrogen atoms in 1 mole of C2H6 equal to 6. Very good. So number of moles of hydrogen atoms in 3 moles of C2H6. 6 into 3 means
18 equal to 18. Now last one, number of molecules of ethane. So see, number of molecules of ethane in number of molecules in 1 mole of ethane, that is equal to Avogadro's number 6.022 into 10 raised power 23. So number of molecules in 3 moles of C2H6 equal to 3 times 6.022 into 10 raised power 23, that is 18.066 into 10 raised power 23, or we can write it as 1.8066 into 10 raised to power 24. 1.8066 into 10 raised to power 24. ठीक क्या करते हैं, ठीक है, ओके बेटा, हाँ बाय. So thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel, and we will have the sessions free of cost for all the 11 standard theory as well as questions. NEET and JEE questions are also covered. Do like and share my channel, friends. Thanks.